1 rhetoric, noun. मुअस्सिर कायल करने या लिखने का फ़न, ख़ास तौर पर तकरीर के आदाद व शुमार और दीगर साख्ती तकनीकों का इस्तेहसाल। फ़िन खिताबत और फ़िन तहरीर। गरजदार और भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल। शौकत अल्फाज, लिसानी, इल्म बयान। The art of effective or persuasive speaking or writing, especially the exploitation of figures of speech and other compositional techniques. 2 periodic, adjective. वक्फे वक्फे से। दूरी गर्दिशी। नवीती। मियादी। Appearing or occurring at intervals. 3 abysmal, adjective. नाकाबिल पैमाइश, गहरा, बेपना गहराई। Extremely bad, appalling. 4 prevalence, noun. फैलाव, तरवीज। The fact or condition of being prevalent, commonness. 5 paradigm, noun. नक्श अव्वल, नमूना, मिसाल, इब्तिदाई। A typical example or pattern of something, a pattern or model. 6 gigantic, adjective. बहुत बड़ा, इफरीत, दिवहकल जसामत का। Of very great size or extent, huge or enormous. 7 leap, verb. कूदना, उछलना, छलांग लगाना। Jump or spring a long way, to a great height, or with great force. 8 misery, noun. बदनसीबी, तकलीफ, ख्वारी। A state or feeling of great physical or mental distress or discomfort. 9 surge, verb. तेजी से ऊपर चढ़ना, जोर से हिलना या हिलाना। Of a crowd or a natural force, move suddenly and powerfully forward or upward. 10 adversity, noun. आफत, बदकिस्मती, मुसीबत, नहुसत। A difficult or unpleasant situation. 11 prone, adjective. मुन्ह के बिल, ढलवान। Likely or liable to suffer from, do, or experience something unpleasant or regrettable. 12 surveillance, noun. हिरासत, कड़ी निगरानी। Close observation, especially of a suspected spy or criminal. 13 gigantic, adjective. अजीम, बेहद बड़ा, दो नुमा। Extremely large. 14 commemorate, verb. याद मनाना का जिक्र करना। To remember officially and give respect to a great person or event, especially by a public ceremony or by making a statue or special building. 15 catastrophe, noun. आफत, मुसीबत, अजीम तबाही। A sudden event that causes many people to suffer. Ten priorities for UHC. Zafar Mirza. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published on December 16, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. December 12 is Universal Health Coverage Day. It commemorates the resolution on global health and foreign policy, adopted by the UN General Assembly in 2012, urging countries to accelerate progress on UHC. To recall, UHC means that all people and communities can use the promotive, preventive, curative, rehabilitative and palliative health services they need, of sufficient quality to be effective, while also ensuring that the use of these services does not expose the user to financial hardship. UHC is no longer a mere slogan or rhetoric. It has developed into a new science at the crossroads of medicine, public health, health systems, and social sciences. A UHC index has been developed, and WHO and the World Bank together issue a periodic report on how regions and countries are performing on improving access to essential health services and ensuring financial protection for the poor and vulnerable. On the occasion of UHC Day, I have listed 10 key priorities to advance UHC in Pakistan. With our abysmal mother and child indicators, high prevalence of preventable communicable and non-communicable diseases, low health budget, dominant and loosely regulated private health sector and increasing frequency of health emergencies,
healthcare priorities can be many and varied. The list below has been developed for the steady and sustainable advancement of UHC. We need a paradigm shift where primary healthcare is concerned. UHC is the realization of the right to health. However, it is not clearly established in Pakistan's constitution. The right to health, like the right to education, needs to be established as a constitutional right. All political parties should work towards such a constitutional amendment. Pakistan has made huge progress in the last 4 years in terms of developing a cost-effective and costed national essential health services package and provincial EHSPs. The integrated delivery of 88 high-priority health services at the district level can address most prevalent health risks and diseases. The EHSP should be the centerpiece of healthcare, guiding the reorientation and strengthening of all the building blocks of the healthcare system, governance and regulation, training and deployment of health workers, financing, health information systems, and provision of medicines and health technologies. We have also made a gigantic leap by establishing the Sehat Sahulat program, which has survived 3 governments. However, what started off as a financial protection mechanism for vulnerable groups in case of hospitalization has been universalist for political reasons. This is neither sustainable nor the best use of public money in a declining economy. The original goal of the program needs to be restored by limiting Sehat Sahulat to poor and vulnerable groups and expanding it to cover ambulatory care. We need to seriously prioritize primary health care. Up to 70% of health needs can be taken care of at the PHC level. No country has been able to improve its vital health indicators without improving PHC. We have to shift our investments from big hospitals to quality PHC. Our public sector tertiary hospitals are overly crowded because our PHC is not working. PHC in Pakistan has become synonymous with poor healthcare for the poor. When was the last time any one of us took a loved one to a BHU or RHC? We need a paradigm shift on PHC at the policy level, where allocations and operations are concerned. Prevention is not only better but also cheaper than cure. Effectively managing risks too, and the determinants of health spares us misery and expense. Ensuring safe blood transfusions and injection safety, for example, will drastically reduce the spread of HIV and hepatitis C. We have to strengthen preventive, promotive and rehabilitative healthcare. With around 60 PC of out-of-pocket health expenditure primarily going to the private health sector, UHC cannot advance at the national level without improving and involving private care, especially general practitioners who provide the bulk of PHC. Medical colleges, public and private, should develop PHC facilities along with hospitals for providing quality healthcare, as well as for training their students. The capitation-based Sehat Sahulat program needs to be extended to the PHC level for private sector GPs who should be trained as family physicians so that they can provide quality PHC. UHC means covering everyone, but the way our population has swelled and continues to grow unchecked, no surge in resources can meet the people's healthcare needs. We now have the world's 5th largest population. With over 4 million unwanted pregnancies every year, we are clearly not being able to ensure the availability of contraceptives. The government must pay constant attention to population control by overhauling the Lady Health Workers program and ensuring the availability of contraceptives. Our health workforce's education and training aren't aligned with our healthcare needs. The average fresh medical graduate has no idea about our disease burden, the organization of the healthcare system or health policies. He or she has never been exposed to primary healthcare during training. There is an urgent need to reform our medical and public health curricula and train the workforce where needed. Healthcare includes health security in the face of sudden adversity. Readiness to respond to health emergencies through strengthening essential public health functions is very much a part of UHC. Pakistan is prone to emergencies, and climate change-induced catastrophes are on the rise. The COVID-19 experience has proven the importance of a reliable surveillance system to pick early warning signals of disease outbreaks and of data-based response decisions.
Though Pakistan has responded well to COVID-19, its lessons should guide the strengthening of relevant policies and institutions. 70% of our disease burden is now made up of non-communicable diseases, blood pressure, diabetes, mental health problems, cancer, etc. These conditions need to be prevented in the first place. Once they develop, lifelong treatment is required. Our healthcare system is not organized to provide long-term care. Linking each individual's digital medical record to his or her CNIC is the way to ensure that the doctor can examine a patient's history before prescribing a new set of expensive diagnostic tests and medicines. With technological innovations and the use of telemedicine, expanding healthcare coverage is not an unattainable dream. UHC is progressive, but its pace and direction is in our hands. The writer is a former SAPM on health, professor of health systems at Shifa, Tamirai Millet University, and who advisor on UHC. Published in Dawn, December 16, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. 12 दिसंबर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है। ये 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की तरफ से मंजूर करदा आलमी सेहत और खारजा पॉलिसी पर करारदाद की याद दिलाता है, जिसमें ममालिक पर जोर दिया गया था कि वो UHC पर पेशरफ्त को तेज करें। याद रखने के लिए UHC का मतलब ये है कि तमाम लोग और कम्युनिटीज मुअस्सर होने के लिए काफ़ी मेयार की हौसला अफजाई, रोकथाम, इलाज, बहाली और सुकून आवर सेहत की खिदमात का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इस बात को भी यकीनी बनाते हैं कि इन खिदमात का इस्तेमाल सारिफ को माली मुश्किलात का सामना नहीं करता है। UHC अब महज एक नारा बयानबाजी नहीं है। ये तिब, सेहत आम्मा के निज़ाम और समाजी उलूम के चौराहे पर एक नई साइंस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक UHC इंडेक्स तैयार किया गया है और WHO और वर्ल्ड बैंक मिलकर वक्तन फ़वक्तन एक रिपोर्ट जारी करते हैं कि किस तरह खित्ते और ममालिक ज़रूरी सेहत की खिदमात तक रसाई को बेहतर बनाने और गरीबों और कमज़ोर अफराद के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। UHC डे के मौके पर मैंने पाकिस्तान में UHC को आगे बढ़ाने के लिए 10 अहम तरजीहात का जिक्र किया है। हमारे नाकिस माँ और बच्चे के इशारे, काबिल रोकथाम मुताद्दी और गैर मुताद्दी बीमारियों का ज़्यादा फैलाव, सेहत का कम बजट, गालिब और ढेले ढाले तौर पर मुनज़्ज़म निजी सेहत के शोबे और सेहत की हंगामी सूरत हाल की बढ़ती हुई ताद्दुद के साथ सेहत की देखभाल की तरजीहात बहुत सी और मुतनव्वे हो सकती है। ज़ैल में दी गई फहरिस्त UHC की मुस्तहकम और पायदार तरक्की के लिए तैयार की गई है। जहां बुनियादी सेहत की देखभाल का ताल्लुक है, हमें एक मिसाली तब्दीली की ज़रूरत है। UHC सेहत के हक का एहसास है, ताहम ये पाकिस्तान के आईन में वाज़े तौर पर कायम नहीं है। तालीम के हक की तरह सेहत के हक को भी आईनी हक के तौर पर कायम करने की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों को इस तरह की आईनी तरमीम के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 सालों में एक सस्ते और लागत वाले कौमी ज़रूरी सेहत की खिदमात पैकेज और सूबाई EHSPs को तैयार करने के लिहाज से बहुत बड़ी पेशरफ्त की है। ज़िले सतह पर 88 आला तरजीही सेहत की खिदमात की मरबूत फराहमी से सेहत के सबसे ज़्यादा आम खतरात और बीमारियों से निपटा जा सकता है। EHSP को सेहत की देखभाल का मरकज़ होना चाहिए, जो सेहत की देखभाल के निज़ाम के तमाम बिल्डिंग ब्लॉक्स, गवर्नेंस और रेगुलेशन की बहाली और मजबूती की रहनुमाई करता है। सेहत के कारकुनों की तरबियत और तैनाती, फिनांसिंग, सेहत की मालूमात के निज़ाम और अद्वियात और सेहत से मुताल्लिक़ टेक्नोलॉजियों की फराहमी। हमने सेहत सहूलत प्रोग्राम कायम करके एक बहुत बड़ी छलांग भी लगाई है, जो 3 हुकूमतों से बच चुका है। ताहम अस्पताल में दाखिल होने की सूरत में कमज़ोर ग्रोहों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ के मैकेनिज़्म के तौर पर जो कुछ शुरू हुआ था, इसे सियासी वजूहात की बिना पर आफाकी बना दिया गया है। ये ना तो पायदार है और न ही ज़वाल पजीर मईशत में अवामी पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल है। इस प्रोग्राम के असल मकसद को सेहत सहूलत को गरीब और कमज़ोर ग्रोहों तक महदूद करके बहाल करने की ज़रूरत है और इसमें तौसी करके एम्बुलेटरी केयर का अहाता करने की ज़रूरत है।
हमें बुनियादी सेहत की देखभाल को संजीदगी से तरजीह देने की जरूरत है। PHC सतह पर सेहत की 70% तक जरूरियात का ख्याल रखा जा सकता है। कोई भी मुल्क PHC को बेहतर बनाए बगैर अपने अहम सेहत के इशारियों को बेहतर बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। हमें अपनी सरमायाकारी को बड़े अस्पतालों से मियारी PHC में मुंतकिल करना होगा। हमारे पब्लिक सेक्टर के तीसरे दर्जे के अस्पतालों में ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ है क्योंकि हमारा PHC काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में PHC गरीबों के लिए नाकिस सेहत की देखभाल का मुतरादिफ बन गया है। आखिरी बार कब हम में से कोई किसी अजीज को BHURHC ले गया था? हमें पॉलिसी की सतह पर PHC पर एक मिसाली तब्दीली की ज़रूरत है जहां मुख्तस और ऑपरेशन का ताल्लुक है। रोकथाम न सिर्फ बेहतर है बल्कि इलाज से भी सस्ता है। मुअस्सर तरीके से खतरात का इंतजाम और सेहत के तयन करने वाले हमें मुसीबत और अखराजात से बचाता है। महफूज खून की मुंतकिली और इंजेक्शन की हिफाजत को यकीनी बनाना, मिसाल के तौर पर HIV और हेपेटाइटिस C के फैलाव को तेजी से कम करेगा। हमें रोकथाम, हौसला अफजाई और बहाली की सेहत की देखभाल को मजबूत बनाना होगा। जेब से बाहर सेहत के अखराजात का तकरीबन 60% बुनियादी तौर पर निजी सेहत के शोबे में जा रहा है। UHC कौमी सतह पर निजी निगहदाश्त को बेहतर बनाने और शामिल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता है, खास तौर पर आम प्रैक्टिशनर्स जो PHC का बड़ा हिस्सा फराहम करते हैं। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को मियारी सेहत की देखभाल फराहम करने के साथ साथ अपने तलबा की तरबियत के लिए अस्पतालों के साथ साथ PHC की सहूलियात भी तैयार करनी चाहिए। रिपीटेशन पर मबनी सेहत सहूलत प्रोग्राम को निजी शोबे के GPs के लिए PHC की सतह तक बढ़ाने की ज़रूरत है, जिन्हें फैमिली फिजिशियन के तौर पर तरबियत दी जानी चाहिए ताकि वो मियारी PHC फराहम कर सकें। UHC का मतलब हर एक का अहाता करना है, लेकिन जिस तरह से हमारी आबादी में इजाफा हुआ है और बेकाबू हो रहा है, वसाइल में कोई इजाफा लोगों की सेहत की देखभाल की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता है। अब हमारे पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है। हर साल 4 मिलियन से ज़्यादा नापसंदीदा हमल के साथ हम वाज़े तौर पर माने हमल की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के काबिल नहीं है। हुकूमत लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम की ओवरहालिंग और माने हमल अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाकर आबादी पर काबू पाने पर मुसलसल तवज्जो दे। हमारी सेहत की अफरादी कुव्वत की तालीम और तरबियत हमारी सेहत की देखभाल की ज़रूरियात के साथ मुंसलिक नहीं है। औसत ताज़ा मेडिकल ग्रेजुएट को हमारी बीमारी के बोझ, सेहत की देखभाल के निज़ाम की तंजीम या सेहत की पॉलिसियों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। वो तरबियत के दौरान कभी भी बुनियादी सेहत की देखभाल से बेनकाब नहीं हुआ है। हमारे तिब्बी और सेहत आम्मा के निसाब में इस्लाहात करने और ज़रूरत पड़ने पर अफरादी कुव्वत को दोबारा तरबियत देने की अशद ज़रूरत है। सेहत की देखभाल में अचानक मुश्किलात का सामना करने में सेहत की हिफाजत शामिल है। ज़रूरी अवामी सेहत के अफ़ाल को मजबूत बनाने के ज़रिए सेहत की हंगामी सूरत हाल का जवाब देने की तैयारी UHC का एक हिस्सा है। पाकिस्तान हंगामी सूरत हाल का शिकार है और आबोहवा की तब्दीली से पैदा होने वाली तबाहकारियों में इजाफा हो रहा है। कोविड-19 के तजुर्बे ने एक काबिल एतमाद निगरानी के निज़ाम की अहमियत को साबित किया है, जो बीमारी के फैलने और आदाद व शुमार पर मबनी रद्द अमल के फैसलों के इब्तिदाई इंतबाह सिग्नल्स को मुंतखब करने के लिए है। अगरचे पाकिस्तान ने कोविड-19 पर अच्छी तरह से रद्द अमल जाहिर किया है, लेकिन इसके असबाब को मुताल्लिका पॉलिसियों और इदारों को मजबूत बनाने में रहनुमाई करनी चाहिए। हमारी बीमारियों का 70% बोझ अब गैर मुताद्दी बीमारियों यानी ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस, ज़हनी सेहत के मसाइल, कैंसर वगैरह पर मुश्तमिल है। इन हालात को पहली जगह में रोकने की ज़रूरत है। एक बार जब वो तरक्की करते हैं तो जिंदगी भर के इलाज की ज़रूरत होती है। हमारा सेहत की देखभाल का निज़ाम तवील मुद्दती देखभाल फराहम करने के लिए मुनज़्ज़म नहीं है। हर फर्द के डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड को इसके शनाख्ती कार्ड से जोड़ना इस बात को यकीनी बनाने का तरीका है कि डॉक्टर महंगे तशखीसी टेस्टों और अद्वियात का एक नया सीट तजवीज़ करने से पहले मरीज की तारीख का जायजा ले सकता है। तकनीकी जिद्दत तराजी और टेली मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ सेहत की देखभाल की कवरेज को बढ़ाना एक नाकाबिल हुसूल ख्वाब नहीं है। UHC तरक्की पसंद है, लेकिन इसकी रफ्तार और समत हमारे हाथों में है। मज़मून निगाह साबिक़ मुआविन खुसूसी बराए सेहत शिफा में सेहत के निज़ाम के प्रोफेसर हैं।
तमीम मिल्लत यूनिवर्सिटी और UHC पर WHO के मुशीर। डान अखबार में शाये शुदा 16 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.